SKM 91 نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبر کی جانب۔ آج بتاریخ 3 اگست بروز ہفتے کے دن عیدگاہ حضرت اجال شام میں فلسطین کے مسلمانوں اور اسماعیل ہانیہ کے قتل پر سعید آباد کی تمام خواتین نے مظلوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا۔ جب بھی قوم کے اوپر کچھ برا وقت آتا ہے تو شہر حیدرآباد میں سب سے پہلے خاص کر سعید آباد کی خواتین آگے بڑھ کر نماز ادا کرتے ہیں اور مظلوم لوگوں کے حق میں خصوصی دعائیں کرتے ہیں۔ اس موقع پر سعید آباد کی خواتین نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسرائیل کے مظالم کی سختی کے ساتھ مذمت کی ہے اور غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان لوگوں کی حمایت کی اور کہا کہ مسلسل 10 مہینوں سے عالمی سپر پاور کے سامنے دیار و مددگار پیٹ پر پتھر باندھے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر سعید آباد کی تمام خواتین نے شہدائے غزہ و فلسطین قائد ملت اسلامیہ اسماعیل ابو ہانیہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کو سلام پیش کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اس خصوص میں وہاں کے چند مناظر۔ پیش ہے ہمارے نمائندے رپورٹر ارباز کی یہ خصوصی رپورٹ۔ SKM 91 نیوز کے ایڈیٹر ان چیف اشتیاق احمد کے ساتھ ہر خاص اور اہم خبر کو دیکھنے کے لیے آپ کے اپنے نیوز چینل SKM 91 کو لائک کریں، شیئر کریں اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ Today we have gathered here with a very heavy heart to reflect on the issue that has spanned generations and remain at the forefront of global consciousness, the plight of Palestine, the land and people who were betrayed by the world and especially the Muslim Ummah. This issue is not just a territorial dispute or a border issue or a political dispute as spread and pushed by the liberals, but this is the religious issue and it is the issue for Muslims as well. As we have witnessed since decades that the so-called flag bearers of humanity and the champions of human rights and the ones who claim that they ensure equality, justice and freedom, the United Nations have turned blind eye towards the suffering of Palestinians and the people of Gaza. And they have proved to be of absolutely no use. But it is a shame that with an approx count of billions, an ummah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ummah whose ancestors are Khalid ibn Walid and Umar radiyallahu ta'ala anhu, are asking and begging for help from organizations who were created in the first place to displace and disrupt Muslim nations. So it is foolishness on the side of Muslim to expect any good from United Nations or any other organization. It's high time we realize that we are highly mistaken if we think that it's the people of Palestine who are in trouble. It's actually quite the opposite. Every Palestinian dying to protect their land, their people, and to save themselves from killing and bombardment is straight away going to Jannah as a shaheed. So, and also they are protecting Masjid al-Aqsa and are not compromising at all. So it's a lesson for Indian Muslims as well to take heed and to get in action to save their own people, because we see every day that Muslims are being lynched, their mosques are being destroyed and they are humiliated in the broad daylight and no one is paying attention. So it's important that we also learn from the courage and bravery of the Palestinian people. Palestinians are the real winners and indeed they are the ones who are the safest on the earth if we see from the Islamic point of view. The harm inflicted upon them in the form of bombing, blockade and starvation is a test for them indeed, but it is a test for us also, and we have failed. Rest of the Muslim world will be held accountable on the day of judgment, and mind you, we are doomed if we pay no heed. It's high time we set our priorities straight and fight for our individuality, for the identity of being a Muslim, and we should fight and help to them also. Thank you. اہل غزہ پر 300 دن سے مسلسل اسرائیلی ظلم و ستم اور جاری ہے اور بے قصور بے گناہ شہریوں کو اغوا کر کے
इसराइली जेलों में बदतरीन टॉर्चर किया जा रहा है, औरतों बूढ़ों बच्चों का कत्लेआम किया जा रहा है, और ये सब कुछ पूरी दुनिया के सामने हो रहा है। और मुनाफिक दुनिया अंधी बहरी गूंगी बनी खामोशी के साथ अहले गज़ा के कत्लेआम और उनकी नस्ल कुशी का तमाशा देख रही है। ऐसे में हम ख़वातीन सईदाबाद हैदराबाद इसराइल के इन मजालिम की सख्ती के साथ मजम्मत करते हैं और अहले गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों से इज़हार यकजहती करते हैं, उनकी हिमायत करते हैं और इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनी मुसलमान भाइयों के साथ इज़हार हमदर्दी करते हैं और अहले गज़ा और फ़लस्तीन की जुर्रतों और हिम्मतों को खराज तहसीन पेश करते हैं कि वो मुसलसल 10 महीने से आलमी सुपर पावर्स के सामने निहत्ते बेयारो मददगार पेट पर पत्थर बांधे मुकाबला कर रहे हैं। हम इस मौके पर तमाम शुहदाए गज़ा व फ़लस्तीन कायद मिल्लत इस्लामिया इस्माइल अबू हनिया शहीद रहमतुल्लाह अलैह को सलाम पेश करते हैं और कहते हैं कि आपकी शहादतें और कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी, आपका खून जरूर रंग लाएगा और आपकी रूह मस्जिद अक्सा की आज़ादी और पूरे फ़लस्तीन की आज़ादी और दुनिया में खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा के क़ियाम के ज़रिए खुश और मुतमईन होंगी। हम दुनिया के तमाम गयूर मुसलमानों से ये अपील करते हैं कि वो अपनी हुकूमतों के जबर और तसल्लुत से आज़ाद होकर साइस्पिकों की हदबंदियों और सरहदों को तोड़कर अहले गज़ा की मदद और नुसरत के लिए निकल पड़े, वरना उनका खून नाहक और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और पामाली का गुनाह आपके सर होगा और आप दुनिया में जलीलो खार होकर रह जाएंगे। पूरी दुनिया को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि जब तक मस्जिद अक्सा आज़ाद नहीं होती, जब तक पूरा फ़लस्तीन आज़ाद नहीं होता और जब तक फ़लस्तीन के हर खित्ते में अमन कायम नहीं होता, उस वक्त तक पूरी दुनिया में किसी भी खित्ते में अमन व सुकून कायम नहीं हो पाएगा और दुनिया अमन व सुकून के लिए सिसकती और तड़पती रह जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ख़वातीन सईदाबाद ख़वातीन सईदाबाद क्या दुआएं